हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो गाइड। आज मैं लेकर आई हूँ हेयर ऑयलिंग। एक सीक्रेट टिप्स से मैं आज हेयर ऑयलिंग करूँगी, तो आप लोगों के साथ सीक्रेट टिप्स क्या है वो भी शेयर करूँगी। तो मैंने पहले मेरे लिपस्टिक रिव्यू शेयर किया था, बाद में प्राइमर रिव्यू शेयर किया है, अभी हेयर ऑयलिंग शेयर कर रही हूँ। तीनों वीडियो एक साथ ही बनाया था, तो आप लोग समझ ही रही है। तीनों वीडियो में सिंगल पोस्ट किया है, तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो भी देख लेना। अभी जो मैं हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ, जो ऑयल ले रही हूँ, तो घर का बना हुआ ऑयल कैसे बनाया है वो भी मैंने ब्लॉग बनाया था, तो आप लोग जाइए देखिए, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। और मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर रखना। जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आप लोगों के सामने नोटिफिकेशन जाएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके रखेंगे तो मेरे पहले की जो वीडियो मैंने ऑलरेडी ब्लॉग वगैरह मेकअप स्किन केयर सब शेयर किया है वो भी नोटिफिकेशन जाएगा। तो अभी मैं विटामिन ई कैप्सूल ले रही हूँ। जो सीक्रेट टिप्स आप लोगों को बताया है वो है विटामिन ई कैप्सूल। तो मैं अभी जो ऑयल लिया है कटोरी पर, यहीं पर मिलाऊंगी ये विटामिन ई कैप्सूल। बाद में हेयर पर लगाऊंगी, मसाज करूंगी। आप लोग देखते जाइए, स्किप मत करना। मसाज मैं कैसे करती हूँ, कैसे स्कल्प पर लगाती हूँ, आप लोग देखते जाइए। বাবা বাবা পাটি রাখি দিচ্ছে পুরি রাখি পাটি হ্যাঁ পুরি রাখি দে পাটি দা পুরি পুরি
आज की मेरी हेयर ऑयलिंग वीडियो जो लोग अभी तक देख रही हैं लास्ट तक, तो आप लोग सोच सकते हैं कि मेरे हेयर इतना छोटा है, पतला है, तब भी मैं हेयर ऑयलिंग की वीडियो ये सब शेयर करती हूँ। क्यों शेयर करती हूँ वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जिसकी हेयर लंबा है, घना है, सिल्क है, उसकी हेयर जन्म से ही ऐसा है। इसीलिए वो लोग जो भी दिखाते हैं वो फ़ायदा होगा या नहीं आप लोग नहीं जानते हैं, मैं भी नहीं जानती हूँ। इसीलिए जो मैं दिखाती हूँ, मेरे हेयर पतला है, घना नहीं है, छोटा है, तो इसीलिए मैं हेयर केयर करती हूँ। डैंड्रफ भी नहीं है मेरे हेयर, और मेरे फाटे हुए एक भी हेयर नहीं है, बट मेरे हेयर पतला है, बट छोटे छोटे हेयर गजते रहते हैं। इसीलिए मैं ये सब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जिसकी हेयर कम है, पतला है, वो लोग ट्राई कर सकते हैं। तो आप लोगों को आज का मेरे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट कुछ टिप्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।